Thank you, G5A, and especially the Cinema House. What an inaugural film. I think all of us are feeling emotionally a bit shattered. But it struck me that this film released in 1973 after a year almost of struggle, as Satyu Saab told us in the beginning, and then was about 1947, and we are watching it in 2022. So just look at the trajectory, and it's relevant continuously for these 75 years as a theme. And I'm sure we had heard a lot of resonances which apply to this particular moment. I hope that comes out in our discussion. I'm very pleased that three of these panelists are here because they are associated with, if not the actual film, the memory of the film, the thought of the film, and the idea of the film. But of course, in the beginning, Shama Zaidi ji, it's an honor that you are here. Your name comes up, but I'm sure you did much more. And just to remind us of the struggles of this film being made. What I can't get over it that it was part financed by the government of India. They are part financed because they gave X amount of money, but I think some more had to be raised, if I'm not mistaken. So tell us a little bit about the actual struggle of making a film like this, which is deeply, deeply political and deeply in about a momentous time in this country's history. I don't know what you mean by struggle because during the making of the film, the shooting and all that, there was no struggle as such. But the film grew out of a conversation I had with Rajinder Singh Bedi. We were working together on Ek Chadar Maili Si as a play. And so he said, एक फिल्म बननी चाहिए उन मुसलमानों के बारे में जो नहीं गए. तो मैंने कहा आप लिख दीजिए. ही said नहीं मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखवाओ और इसमत से जाके बात करो, मगर स्क्रिप्ट नहीं लिखवाना, उनको स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती है. तो फिर इसमत आपा के साथ बैठ के फिर उन्होंने गंवा दी वो स्क्रिप्ट. फिर उन्होंने 3 महीने बाद कहा मैं अलमारी साफ़ कर रही थी, वो मिल गई मुझे. तो फिर वो उस पर फिर हमने काम किया और फिर वो स्क्रिप्ट मैंने अपने वालिद को दिखाई और हमारे एक और दोस्त थे पॉलिटिशियन, उनको दिखाई. तो कहने बीबी इसकी कहानी तो ठीक है मगर सियासत बिल्कुल गलत है इसकी. तो फिर मैं कैफ़ी साहब के पास गई. उससे पहले हम इप्टा में बहुत काम कर चुके थे उनके साथ और हमने एक गालिब पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसकी आवाज़ कैफ़ी साहब गालिब बने थे उसमें. तो कैफ़ी साहब ने कहा अच्छा मैं इसकी सियासत ठीक कर देता हूँ. उन्होंने पूरी फिल्म उल्टी पुल्टी करके उसकी कहानी बदल दी, माहौल बदल दिया. उसकी वो जो लिंक थी, थ्रेड वो रहा, मगर उन्होंने सारा उसमें वैसा किया. फिर हम फिर से बैठे, फिर फाइनल वो स्क्रिप्ट का वो बहुत 5-6 घंटे की फिल्म थी वो जो कैफ साहब ने लिखी थी. फिर उसको हम कम किया, थोड़ा संक्षिप्त किया, फिर आखिरी वो स्क्रिप्ट बनी. फिर आपको पता है कि उसमें सारे एक्टर जो थे वो इप्टा के थे. इससे पहले इप्टा अब्बास साहब ने फिल्म बनाई थी धरती के लाल. उसके बाद ये शायद दूसरी फिल्म है जिसमें सब तकरीबन सारे एक्टर इप्टा के थे और कैफी साहब भी इप्टा के थे. और जो आगरे के एक्टर थे वो भी आगरा इप्टा के थे. तो इस तरह से वो एक नाटक की तरह उसका रिहर्सल हुआ. 4-5 दफ़े उसको पढ़ा सबने मिलके और सबको अपनी लाइनें ज़बानी याद थी. तो इस तरह से तो ये थी स्ट्रगल स्क्रिप्ट के हिसाब से. और बाद में तो सत्यू ने आपको बताया कि NFD वो FFC उस ज़माने में होती थी और वो सेंसर में क्या क्या हुआ. वो एक बात उन्होंने नहीं बताई शायद सत्यू साहब ने, कि फिल्म जब बनी और रिलीज़ हुई तो अडवाणी साहब ने ऑर्गेनाइज़र में फिल्म के ख़िलाफ़ लिखा बिना फिल्म देखे हुए. हालांकि वो फिल्म के बारे में एक ज़माने में काफ़ी कुछ जानते थे. तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से पैसा मिला है ये वो. तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये आपको पता है कि ये सरकार ने पैसे दिए हैं. तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़िल्म देखी नहीं है. तो फिर उनको दिखाई गई फ़िल्म
और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने बिना देखे फिल्म के इसके बारे में लिखा, फिर उन्होंने प्रिंट किया माफी नहीं, को? प्रिंट में माफ़ी नहीं मांगी, ज़बानी माफ़ी मांगी उन्होंने। और फिर उसके बाद सत्यू साहब ने बताया कि 8-10 महीने लगे, 11 महीने हाँ? लगे, 11 महीने लगे फिल्म को रिलीज नहीं करने नहीं, में। वो तो दूसरी कहानी है। मैं उस फिल्म रिलीज के बाद जो उसके बारे में लोगों ने कमेंट्स किए, और फिर B.R. चोपड़ा ने भी बहुत उसके खिलाफ लिखा फिल्म के। अच्छा, हम्म, उनका क्या प्रॉब्लम था? मुझे पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम था। उन्होंने मीन मेख निकाले फिल्म में, जैसे कि क्या? यही कि ये पाकिस्तानी फिल्म है और इस टाइप की चीज़। अच्छा, इसमें मुझे प्रो पाकिस्तानी वैसे कुछ दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा, पता नहीं कहीं उनको कुछ दिखाओ। आप रेफ्यूजी नहीं है ना? रेफ्यूजी के बच्चे तो हैं ना। हाँ। अच्छा शबाना, मुझे तो ये दिखाई दिया कि पाकिस्तानी नेवर कीप देयर वर्ड्स। तो ये प्रो पाकिस्तानी तो हुआ नहीं। जो पाकिस्तान जाता है वो बाद में बेईमानी करने लगता है। वैसे पाकिस्तानियों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा ये सब गलत सलत आपने बनाई है फिल्म, ये कोई फिल्म है? तो शबाना, आपके लिए, फॉर यू इट्स डबली of course traumatic on many emotional levels, but to see your mother and remember what she must have told you, and then to hear your father's voice and to understand that he has co-written the script, as she says, turned it around more or less. So just personally, what did you think while you were watching this film? I know you're really emotionally kind of. Yeah, of course, it's a very, very beautiful film. And this is, I think, the third time I'm seeing it, but I've seen it on a big screen after a very long time. And apart from the fact that it has my mother and my father, and I know that Mahol, etc., what strikes me is that so many years after we made the film, it just cuts to the bone and it is so close home. And that's what I feel कि हम लोग कैसे माहौल में रह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, या पता है तो उसके बारे में सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं. What is the state of the community at the moment and what is happening? और हम लोग हैं कि बस चल रहे हैं उसके साथ. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये कहा जाता था कि अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दें तो मेंढक उछल जाता है और अपनी ज़िंदगी बचा लेता है. लेकिन अगर उसको आप एक नीम गर्म पानी में डालें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बढ़ाते रहें टेम्परेचर, तो मेंढक को पता नहीं चलता और वो मर जाता है. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम नीम गर्म पानी में भी नहीं है. पूरा जो पानी है वो उबल के हमारे सर के ऊपर चला गया और हम कैसे रह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. एंड व्हाट आर वी थिंकिंग एज अ सोसाइटी, व्हाट आर वी थिंकिंग, एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द secular structure of this country. That's what for me it just brings it sharply home. And yet there are people like Balraj Sahni, there are people like Farooq Sheikh who still stay back and say कि नहीं, we believe in the constitution and we believe that we have an equal right, and they are struggling. That's what I feel. So it cuts to the bone, yes. I felt, and I would like to hear your reaction to it. I felt that if somebody were to see this film today, not this audience, elsewhere, and they'll say, surely this film was made last 6 months ago. Why is it so relevant and timely even today that 75 years later we are talking the same rubbish? Why do you think that is so? I think
मैं ज़रा शुरू से ही बात करता हूँ। ये देखिए जो फिल्म है, इसमें इस्मत चुगताई की 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिनकी झलकें मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। स्क्रिप्ट उससे बड़ी है उन कहानियों से। एक तो है चौथी का जोड़ा, वो जो एंगल लड़की का है आमना का, और एक है जड़ें जो कि उस हवेली के बारे में। लेकिन बाकी ये उसके जो शॉर्ट स्टोरी हैं जहाँ ये जिक्र करते हैं कि वो बूढ़ी औरत को अपनी हवेली याद आती है, ये, और जिस तरह वो चौथी का जोड़ा रखा हुआ है और रखा ही रहता है, बहुत मशहूर कहानी है उनकी। ये एक अजीब मुझे ख्याल आया जब मैं देख रहा था फिल्म, बहुत बरसों बाद। मैंने जब देखी थी 74 में, तो कम से कम 5-6 बार देखी थी जब वो थिएटर में लगी हुई थी। मुझे इतनी पसंद आई थी, और मैं सत्यू साहब से मिला भी फिर जाके उनसे। मेरी पहले मुलाकात नहीं थी, एंड आई मेट हिम, हमारे बड़े अच्छे रिलेशन डेवलप हुए। ये एक अजीब पिक्चर है। ये पिक्चर के बारे में नहीं कर, ये तो सिचुएशन है। आमतौर से क्या होता है कि कोई बड़ी बात होती है जिसके कुछ कोलैटरल डैमेज होते हैं। ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं गर्म हवा में, ये कोलैटरल डैमेज का कोलैटरल डैमेज है। कोलैटरल डैमेज था पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंस का कोलैटरल डैमेज था, और ये उस कोलैटरल डैमेज का कोलैटरल डैमेज है जो हम देख रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था सुधीर साहब से बाहर कि अगर कभी कोई किताब लिखी जाए, 10 biggest blunders that humankind committed, उनमें ये हो नहीं सकता है कि इंडिया के डिवीजन का और पार्टीशन का जिक्र नहीं है। इट वॉज सो इलॉजिकल, सो स्टूपिड। लेकिन अब ये हुआ, और कमाल ये है कि एक तरह से ये फिल्म बिल्कुल रेलेवेंट है, दूसरी तरह से थोड़ी सी आउटडेट हो गई है। ये बांग्लादेश के बाद आउटडेट हो गई। देयर आर ऑलमोस्ट 3 lakh people with green passports of Pakistan in Bangladesh, living in some reservations. They are non-citizens, because when Bangladesh came into existence, these are the people who said, we are not Bangladeshis, we are Pakistani, we had come to Pakistan, and we will go back to Pakistan, to West Pakistan. We don't want to live in Bangladesh. West Pakistan refused to take them, and they are still there. तो ये जो चॉइस है, ये चॉइस की कहानी तो खत्म हो गई बांग्लादेश के साथ। ये जो मिथ था ये खत्म हो गया बांग्लादेश के साथ, कि जो उनके अपने सिटीजन हैं उन्हें वो लेने को आज तक तैयार नहीं। अब वहां तो ताला बंद चाबी फेंक दी, वो तो किस्सा खत्म होगा। तो उस वक्त था, और उस वक्त भी अजीब अजीब बातें हुई जो कि बड़ी हैरत होती है मुझे। लाइक देयर वर मेनी पीपल, ये एक वो लड़का ही नहीं था जो आ गया था शादी के लिए वापस। देयर वर मेनी 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 पीपल हु आर कमिंग बैक, जो गए थे 3 महीने के लिए, 4 महीने, और 3-4 महीने में या विद इन 1 ईयर उनको रियलाइज हो गया कि ये गलती हो गई। साहिद साहब फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग। नहीं, साहिद साहब तो ओरिजिनली थे लाहौर में, और फिर वो, एंड ही हैड गॉन टू टेक हिज मदर। उससे हुआ क्या कि जो वेस्ट बॉर्डर है, इधर भी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान, ये वेस्टर्न पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिट की कंडीशन ओनली ऑन वेस्टर्न बॉर्डर लगाई कि आपको परमिट लेना पड़ेगा वापस आने के लिए। जब तक इंडियन गवर्नमेंट आपको परमिट नहीं दे सकती, आप आ नहीं सकते। उस साइड पर नहीं लगाया, उधर जरूरत नहीं थी। उधर यूपी के लोग नहीं गए थे जो वापस आ रहे थे, राजस्थान के लोग उधर नहीं गए थे जो वापस आ रहे थे, यहां से वापस आ रहे थे। They had immediately realized that it is a mistake, और इसको उनको रोका गया by a secular government जो कि आइडियोलॉजिकली पार्टीशन के खिलाफ थी। ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
लेकिन आप इसको गौर से देखिए, ये बहुत कमाल की पिक्चर है। इसने ये बताया है कि कोई भी कम्युनिटी मोनोलिथ नहीं है, उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, और इसमें कितनी सेल्फ डिफीटिंग है ये मुस्लिम कम्युनिटी, ये इससे मालूम होता है। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं और जिसमें ज़्यादातर गड़बड़ हुई है, वो किसी दूसरी कम्युनिटी ने या हिंदू कम्युनिटी ने नहीं की है। अगर इस लड़की के साथ ट्रेजेडी हुई है तो इट इज़ डन बाय सम रिलेटिव, सम पीपल। अगर इनको हर बार मुसीबत में डाला गया है तो वो कैरेक्टर जो है जो कि हलीम यूनुस परवेज का जो कैरेक्टर है उसका है कि जो बाद में कांग्रेस में चला गया, फकरू फकरू। हाँ, और ये बिल्कुल सही है, इस तरह के लोग सब चले गए थे। इसमें भी आपको थोड़ी सी बताऊं मैं आपको बहुत कमाल की बात, जो हुआ था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग का जलसा हुआ था इसलिए कि 2 आदमी गिरफ्तार हुए थे और उन आदमियों में से उनके प्रोटेस्ट पे ये जलसा हो रहा था। उन 2 में से एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। He was such a big freedom fighter. There was another gentleman. His name was Ansar Harwani, who was the member of Congress Central Committee, जो अब वर्किंग कमेटी कहलाती है, at the age of 23. जबकि उसके मेंबर्स कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कृपलानी, जेपी, सुभाष चंद्र बोस, इस हाइट के लोग जब मेंबर थे तो ये 23 साल का लड़का भी उसमें मेंबर था, जो बरसों अलग अलग वक्त में जेलों में जाता रहा और 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता जेल से छूटा। जब 52 में पहला इलेक्शन आया तो सैफुद्दीन किचलू और अंसार हारानी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और एक बेगम एजाज रसूल थी, हु वाज द बेगम साहब ऑफ नवाब साहब की बीवी थी, संदीला की, एंड शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेडीज विंग। उनको कांग्रेस ने ज्वाइन कराया और टिकट दिया, कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये जो सब बातें आप इसमें देख रहे हैं, ये इनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री और रियलिटी है। और ये शरीफ आदमी स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेता है, ये शरीफ आदमी कमेटी की मीटिंग में नहीं जाता है। ये गड़बड़ बात है ज़रा सी कि आप खुद धारे से कट के अलग होके सस्पिशन में जी रहे हैं। आप ये कह तो रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि आप यहाँ जो हो रहा है वो एक बेटा ही है आपका छोटा वाला जो ज्वाइन करता है इन चीज़ों को। जब वो स्टूडेंट्स कंप्लेन पे साइन करते हैं तो ये शरीफ आदमी जो है सलीम मिर्ज़ा कहता है तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं जो है गलतियाँ जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एक के बाद एक की हैं। हालांकि मैं पाकिस्तान की जो डिमांड है उसके बारे में आप लोग समझते हैं, आमतौर से लोग समझते हैं कि साहब वो तो आम मुसलमान था, वो मांग रहा था, गलत है। हकीकत ये है कि जो इलेक्शंस उस वक्त होते थे उसका लॉ ये था कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है। तो इसके मतलब गरीब मुसलमान का तो कोई सही नहीं था। हकीकत ये है कि जब 35 में पहली दफ़ा जिन्ना ने कराची में की उनकी मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में डिमांड रखी क्लियरली कराची पाकिस्तान की, तो विद इन अ फ्यू डेज 30,000 40,000 बुनकर जो थे उन्होंने दिल्ली में मुसलमान बुनकर उन्होंने जुलूस निकाला उसके खिलाफ। हकीकत यह है कि एक पार्टी फॉर्म हुई थी, मुस्लिम पार्टी अगेंस्ट द पार्टीशन, एंड द लीडर ऑफ दैट पार्टी वाज किल्ड। इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, दे मर्डर्ड हिम। तो ये जो डिमांड थी ये एलीट की, नवाबों की, बम्बई के मुस्लिम बिजनेसमैन की, बिकॉज दे डिडंट वांट टू compete with टाटा एंड बिरला, ये ज़मींदार नवाबों की, इसलिए कि इनको डर था जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों से कि ये तो सोशलिस्ट हैं और ये हमारी रियासतें और जागीरें ख़त्म कर देंगे।
इनके माइंड में कोई कंसेप्ट नहीं था कि पाकिस्तान क्या है। एक मरतबा लियाकत अली खान, जिनकी तस्वीर शुरू में दिखाई गई थी, वो ट्रेन से जा रहे थे, अलीगढ़ से पास हुए तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने ट्रेन रोक ली। तो किसी लड़के ने पूछा, उधर खड़े हुए थे, कि लियाकत अली खान साहब ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना तो क्या अलीगढ़ पाकिस्तान में होगा? तो कहने लगे इंशाल्लाह। तो ये उनके जियोग्राफी और हिस्ट्री का सेंस था उनका। तो ये एक हो गया इंसिडेंट, इसमें बहुत से लोग जिम्मेदार हैं। एक स्टेज आया जब कांग्रेस ने भी महसूस किया कि छुटकारा इसी में है कि अब ये पाकिस्तान बन ही जाए, तो अब सी टू इट के बने, निकलने ना पाए अब इस ट्रैप से। ये भी है, ये आयशा जलाल का तो बहुत ज़्यादा ये थेरी है, लेकिन बहरहाल देयर वाज एन एलीट सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स हु वर थिंकिंग के यहाँ तो अब ये हेवन बनाने वाले हैं। वो बहुत अच्छा हेवन बना, आजकल तो बहुत ही कमाल का चल रहा है। तो ये मतलब दुख की बात है, जो शबाना ने कहा वो सच है कि लोग मुझे बोलते हैं, देखिए ये फैज़ की पोएम है, ये कैफ़ी की पोएम है, ये सरदार जाफरी की पोएम है, देखिए, और ये कृष्णचंद्र की जो नावल है ये आज भी रेलेवेंट है। इट्स अ शेम कि आज भी रेलेवेंट है, कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात। काश ये सब इरेलेवेंट हो जाए, ये कहें भाई कभी हिस्ट्री में ऐसा था, लेकिन हकीकत ये है कि ये रेलेवेंट है। इट्स अ ट्रेजेडी कि रेलेवेंट है। अगर ये फिल्म जो हमने देखी है रेलेवेंट है तो ये दुख की बात है, खुशी की बात नहीं है, लेकिन है। बल्कि आज सिचुएशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब है इससे। आपको लगता है जावेद साहब कि आज की सिचुएशन पे मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, फिल्म ऐसी बन सकती है? बन सकती है, रिलीज नहीं होगी। पर बनाएगा कौन? जिसे ये समझ नहीं होगी कि रिलीज नहीं होगी। क्योंकि बनाने वाले भी आजकल नहीं बनाने का मतलब ही नहीं है, बनाने वाले लोग हैं, वो रिलीज नहीं होगी। देखने देंगे आपके नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं उसमें कोई बहस नहीं है। हाँ? नहीं क्या मतलब? नहीं हो सकती है रिलीज। सरकार तो फाइनेंस नहीं करेगी, समझ गए, लेकिन कोई भी फाइनेंस करे और बन भी जाए, आप कहते हैं रिलीज नहीं होगी? आजकल यूट्यूब है, ये है, वो है। हाँ, उस पर आप कर सकते हैं, मगर ये कि फिर आप के अकाउंट्स करेक्ट होने चाहिए, आपके जैसे नहीं है ना। तो मेरे जैसे, मेरे अकाउंट्स में है ही नहीं कुछ। Now to come back to the film, Siddharth, there are certain nuggets which of course Shama will also share. But my mother used to say कि जब बलराज सानी के बारे में सोचा, Shama tell me कि बलराज जी को ये रोल ऑफर किया, तो उन्होंने थोड़ा सा वो हिचकिचाया और उन्होंने कहा इस माहौल को मैं नहीं जानता हूँ और मैं कैसे कर पाऊँगा ये रोल। तो फिर अब्बा के एक दोस्त थे भिवंडी में मुसलमान, तो वहाँ जाके 10 दिन रहे, उनकी चारपाई पे सोते थे बलराज सानी, और जब 10 दिन उन्होंने वहाँ गुजारे तब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ये फिल्म करूँगा। तो आप सोचिए उस ज़माने में इतना बड़ा स्टार था वो, मगर उसकी ये हिचकिचाहट और ये कोशिश कि जाके उस माहौल में एक्चुअली रहें, वो कितनी प्रेशियस बात है फॉर द सेक ऑफ अ रोल। एंड लुक एट हिज परफॉर्मेंस एंड हिज फेस, इट just touches you straight, and the man didn't get the national award for it. Can you imagine? And he never got to see it. And he didn't get to see it, which was a very big tragedy, because what had happened is in this film, ये लोग इनके पास नागरा नहीं था, they couldn't afford a नागरा, so they shot, they recorded the sound on that small little yellow cassette player. तो obviously जब उसकी dubbing की बात हुई तो वो sync नहीं था, तो वो सुनते थे और फिर बंद करके फिर उसको सिंक करते थे, क्योंकि स्टेज के एक्टर्स थे तो उनको अपने डायलॉग याद करने का ये
फायदा था कि ये आप सोचिए, विदाउट एनी साउंड ट्रैक देव डन द इंटायर डबिंग ऑफ द फिल्म. और बलराज जी ने लास्ट डे इसकी डबिंग की और कहा कि इस फिल्म के बाद सत्यजीत रे को भी दाढ़ी रखनी पड़ेगी, पड़ेगी. ये उनका, इतनी उनको वो पसंद आई. एंड अगले दिन ही पास्ड अवे. So he, the dub. yeah, so he didn't get Tell to see me, the film. Shamaji, you can tell us also, but that scene where he sees his His daughter daughter. dead, That happened to himself. no, that happened to himself, but did you feel that this was a very tender scene that he had to do? Obviously. But he agreed? Or was he emotionally distraught? I mean, I told you, he made us read the script 6 times. So obviously he knew the film backwards and forwards. But was he distraught after that? Was he upset after that? Yeah, he was quite shaken. I mean, he didn't talk to anybody for quite some time after the scene was over. Because it was so close to the bone for him, wasn't it? No, and you know, I was just telling somebody here, look at the dialogue and the ज़बान जो इस्तेमाल की गई है, मतलब it's just outstanding. और आप मुझे बताइए कि ये डायलॉग तो डायलॉग लगते ही नहीं. वो तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिश्ता जो अब्बा के साथ है वो हूबहू वैसे ही कर दिया, तुम्हारा रिश्ता जो बाबा के साथ है वो दोनों भाई बहन में कर दिया. मुझे लगता है कि बिल्कुल जिंदगी से निकले हुए हैं. मगर जिस बात को मैं आज नोटिस करी थी वो ये थी कि ये ज़बान जिसको हम उर्दू कहते हैं, आज किस तरह की ज़बान को हम उर्दू कहते हैं, और हिंदी फिल्मों में ख़ास तौर से किस तरह उर्दू ज़बान को पेश किया गया है मेरे महबूब जैसी फिल्मों में. और ये बताइए कि ये एक भी लफ्ज़ था जो हमारी समझ में नहीं आती. हिंदुस्तानी है, और ये जो हिंदुस्तानी की जो खूबसूरती है वो बस हमारे पूरे समाज से गायब होती चली जा रही है. और हमने जो है ये एकदम फॉल्सली हिंदी को उर्दू से इस तरह से अलग किया है कि उसका कोई लफ्ज़ इसमें नहीं होना चाहिए. और हिंदी के साथ भी हमने वैसा किया जो कि कितनी नाइंसाफ़ी है इस, बिकॉज ज़बान इज सच एन इम्पोर्टेंट part of our syncretic culture. This, I think, Javed Saab should illustrate. मैं On. आपसे What about the? जी, जी. No, I just have a specific point. One is that if you can just illustrate or tell us about how the use of the language has been, because as she said, we understand everything that is being said, and we are not Urdu experts. Secondly, there has to be some imagination is thinking कि भाई Urdu spoken in 1947, not in 1973. So that requires an even more subtle thought that he did not, because otherwise Urdu in Hindi films is very flowery or whatever, but this was not. नहीं, वो जो मेरे महबूब में या इस तरह की पिक्चरों में जो होती है उर्दू, वो तो फेक है. उसकी वजह है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं अलीगढ़ में भी बहुत दिनों रहा हूँ, उसके बाद भोपाल, ये शहर जो है इनमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन. लखनऊ का तो अवध का कल्चर ही मशहूर है. मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई मुस्लिम घर नहीं देखा जिसमें बच्चे अपने बाप को अब्बा हुजूर कहते हो. मगर अब्बा जान तो कहते हैं. अब्बा जान कहते हैं, अब्बा हुजूर मैंने नहीं सुना कभी. तो ये फिल्मों में ही मैंने सुना है अब्बा नहीं, हुजूर. ये माफ़ करिएगा, अब्बा हुजूर तवाइफें कहती हैं. अब वो बचपन में मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ उधर जाने का, तो वो सुना नहीं मैंने. लेकिन मुझे याद है मैंने 74 में जब ये फिल्म देखी थी तो मैंने शायद, मतलब मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार देखी थी, कि देखते ही रहा मैं फिल्म. और इस फिल्म के डायलॉग की खूबी ये है कि कोई ऐसी लाइन नहीं है इस फिल्म जो मुझे ऐसा न लगा हो कि ये तो मैंने कहीं सुनी है अपने बचपन में, लड़कपन में, ये तो बोली जाती थी, ये तो आंगन की ज़बान है, बरामदे की ज़बान है. तो ये इतनी सही
जबान डिपिक्ट किया। मतलब कमाल ये है कि जो दादी एक जगह कहती है वरना रो रो के मर जाएगी कुतिया, अब ये आप देखिए कि आज आप डायलॉग लिख के दें तो डायरेक्टर बोलेगा एक बूढ़ी औरत अपनी ग्रैंड डॉटर को कुतिया कहेगी, एंटी वुमन। क्या बात कर रहे हैं आप। और वो भी और उनके अब्बा हुजूर उनको चुड़ैल कहते हैं। हाँ वो चुड़ैल प्यार से वर्ड है। अब वो बिल्कुल सही, इतनी खूबसूरत लिखी हुई फिल्म है कि इसका कोई एंड नहीं। और दूसरे ये कि ये बिल्कुल शू स्ट्रिंग बजट में बनी हुई पिक्चर है। मेरे ख्याल से उस वक्त अगर मुझे याद पड़ता है तो शायद 2.5 लाख 3 लाख में बनी थी। 2.5 लाख 3 लाख में फिल्म बनी थी। 5 lakhs. नहीं इतना He पैसा said he once said that we had to gather money from here and there. I don't know how true that is. Some extra money. So maybe 3-4 lakhs, 5 lakhs. चलिए 5 कर देता हूँ मैं, लेकिन हालांकि मैंने तो 2.5 सुना था। तो one of the producers was a very close friend, ईशान। तो ये पिक्चर जो है उसके बावजूद आप इसकी जो टेक्निकल क्वालिटी है, अब ये भी प्रिंट ठीक किया गया है, कितना ठीक हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल था वो तो बिल्कुल शार्प और क्लियर था। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये क्लमजीली शूट हुआ है, यहाँ कैमरा मूवमेंट ठीक नहीं है, यहाँ ये किसी तरह से निपटा दिया गया है सीन बजट ना होने की वजह से। ये कितनी स्मूथ इस फिल्म की टेकिंग है और कितनी मुश्किल जगहों पे की गई है। और अगर उनके पास नियाग्रा नहीं था तो मेरे ख्याल से लाइट्स भी ऐसी 1000-2000 तो नहीं होंगी। I think कितने बाबा 5 लाइटें थे, 5 लाइटें थी थ्रू आउट। नहीं, और उसमें दूसरा ये था कि we had ये एक फेक यूनिट था जलाल आगा के साथ, तो उसमें एक फेक कैमरा लेके वो खूब हैं हूँ करते थे ताकि जो सड़क पे लोग हैं, ऑडियंस उस तरफ उनकी तरफ चले जाएं उस तरफ और चले जाएं। बाकी शूटिंग कहीं और होती थी। तो So, ऐसे भी हुआ था। तो गेरिला शूटिंग। ये बदर बेगम का किस्सा बताइए, because that grandmother was outstanding and she is not a professional actress. There is a story about her. She acted in Alamara. As an act, as a Yes. But there is a In the chorus. very interesting story about No, her. the house we shot in, वो जो बड़ा वाला घर था, वो एक हमारे दोस्त का घर था। मतलब तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा के, वो माथुर थे वैसे, तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा के एक रखेल थी और वो उन्होंने आलमारा में रोल किया था, मुझे लगता उनसे आप रोल करा लीजिए। पहले बेगम अख्तर करने वाली थी मगर बाद में उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से वो हमको मिली। खैर आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि किसी की रखेल थी वो। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ। अब जो उन्होंने हमें बताया मैं दोहरा रही हूँ। नहीं मगर इसमें आप जो पॉजिटिव साइड है वो देखिए ना, कितने लोग अपने बाप की रखेल के लिए कुछ करते हैं। इसको अप्रिशिएट कीजिए। नहीं मगर जो अच्छी But बात, she is not a professional actor. no but imagine, But she acted in Alamara. She was only professional. no नहीं मगर आपको पता है कि इस पे जो 4 चांद लगाए हैं वो है दीना पाठक ने। ये आवाज दीना पाठक की है। दीना पाठक has done the in sync sound and imagine without hearing anything, मतलब कितना कैरेक्टर दीना पाठक ने इसको दिया है। My God, it's just unbelievable. And you don't feel that there is any kind of No. different voice or No. something like that. ये बताइए कि मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं इतने सारे, जी फकरू मियाँ भी हैं और सलीम मिर्ज़ा साहब भी हैं, और मुस्लिम कैरेक्टर्स इतने साल हिंदू फिल्मों में बड़े क्लीशेड स्टीरियोटाइप होते थे, दोस्त, सहेली, त्यागी और कोई पेट्रियट वगैरह। आजकल मुस्लिम कैरेक्टर्स ज़रा दूसरी तरफ जाने लगे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहूँगा, ये ठीक है, कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं विद सर्टन पॉलिटिकल एजेंडा, उन्हें जाने दीजिए। कोई हिस्ट्री की भी जो हिस्टोरिकल फिल्म बनी है वो उनमें भी बहुत डिस्टॉर्शन है, वो भी सही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऐसे यंग फिल्म मेकर्स हैं, जैसे यहाँ सुधीर मिश्रा है, ये बैठे अपना निखिल है, ये लोग जो इस तरह के लोग और बहुत हैं, ये तो 2 यहाँ बैठे हैं,
जो अपनी फिल्म में बगैर इस बात को एम्फसाइज किए कि दिस इज़ अ मुस्लिम, वरना पुरानी फिल्मों में जो सो कॉल्ड बहुत अच्छी कहलाती हैं उसमें मुसलमान सेंट होते थे, जो दोस्त होता था वो जान देने को तैयार होता था, जो बूढ़ा आदमी होता था वो इतना अच्छा, मतलब सब मुसलमान जो थे वो किसी वो भी उनके पर निकल सकते थे, वो उड़ते हुए फरिश्तों की तरह जा सकते थे। लेकिन अब नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर जो हैं वो जो जितने प्रोग्रेसिव राइट थिंकिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके यहाँ आपको मिलेंगे, और वो कोई उसको अंडरलाइन भी नहीं करते हैं कि ये देखिए ये मुसलमान है। नहीं, मगर आई थिंक फिल्म मेकर्स को इस बात के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। मेरे ब्रदर इन लॉ जावेद के जो भाई हैं वो साइको एनालिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा डिससर्विस मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम सोशल ने की है, बिकॉज दैट्स पुट the Muslim community into a kind of stereotype. So when I had asked him, so what should be done? He said, देखो कोई इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कैरेक्टर है आपकी फिल्म में, you never talk of that character being a Muslim or showing him doing namaz or anything, लेकिन उसका नाम अगर जावेद हुआ या उसका नाम, जैसे कि वो मैंने एक फिल्म में काम किया था, उस फिल्म का नाम था अर्थ, तो उसमें मजहर खान का एक कैरेक्टर था जो कि बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम हरीश था। तो मुझे याद है कि सलमान ने ये कहा कि अगर हरीश ना होके उसका नाम मजहरी रख देते तो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस में ये जाता रहता है कि दिस इज पार्ट ऑफ of this country, you know. So if you start providing visibility by not pointing out a character because a character is a Muslim or a Hindu or a Christian, but as just people that you show in the film. But I wouldn't be so dismissive to say that those other films which should be just kept aside, because they are hammering the point, and that is something that is really offensive. Yeah, of course there is. So वो भी सही है, लेकिन पर्टिकुलरली जो 2-3 हिस्टोरिकल बनी है वो बहुत डिस्टॉर्टेड थी। No, but the thing about Javed, why don't the way you talk that tribal people are portrayed in films? It's even worse. No, but you see, when Javed was listening to Satyu talk, he felt that this comment should be expanded, which is Satyu said that because if you show the Pakistani, then it harms the Indian Muslim. So Javed wanted to say something about it. I'll give my own. Sorry, with all due, I'm a great admirer, fan of Satyu. मैं इस स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री करता हूँ कि और जो आप कहें आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन हाँ, perhaps history demands certain explanation from the Muslim community. And it needed. Perhaps it's a bit too late today, मगर ये ज़रूरी है कि ये मुल्क जो है रिलीजन के नाम पे और कम्युनिटी के नाम पे डिवाइड हुआ, ये तो झूठ नहीं है। ये भी सच है, let's be honest, कि there have been a certain percentage of Indian Muslims who had their sympathy or interest or love or admiration for Pakistan. अब ये क्या ऐसा कोई नहीं था, ये तो झूठ बात होगी। ये नहीं है कि सब थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे। और मगर सिर्फ उन्हीं को पॉइंट आउट करना और उन्हीं को ये कहना कि they used to clap when Pakistan used to win for cricket and then haul every single Muslim over the coals for that. It's wrong. Of course it's wrong. But the fact is that the Muslim community, the rest of the people who are not like this or who are not like that, have to distinguish themselves from them. करना ही पड़ेगा आपको। No, but you know, you're saying that they have to do it with a consciousness. Yes, Siddharth, let me talk about one incident. If you allow me, it's not about the film, but I do want to माफ कीजिए, हमारे घर का झगड़ा यहाँ आ गया है, लेकिन नहीं, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि no, you have to be conscious of it. देखिए, जब 92 के जो riots हुए थे, तो my mother was very, 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 very hurt and very upset by that. हमारा घर बहुत secular घर रहा है, उसमें जितने भी
फेस्टिवल्स हैं हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, सब के सब। ये अब्बा का एक ट्रेडिशन था जो हम हमेशा फॉलो करते थे। तो उस वक्त मम्मी का दिल इतना भारी था कि शी सेड, पहले होली आने वाली थी और फिर उसके बाद ईद। तो उन्होंने कहा मैं आपके साल नहीं होली नहीं मनाऊंगी और ईद भी नहीं मनाऊंगी। और फिर उनको पॉइंट आउट किया गया कि आपको होली तो ज़रूर मनानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो लोग समझेंगे कि देखो आप भी अब सेक्युलर So नहीं you रहे। are conscious. नहीं तो फिर नहीं। तो फॉर मी that was totally unacceptable. That's something that I take as part of my culture will now become a token of my secularism. I'm not willing to accept it. No, you may not accept it, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और अब तो बकवास है, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल का जो एक मुसलमान बच्चा 18 साल का 19 साल का, उसके लिए नेपाल में और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। और जो उसे फ़र्क याद दिलाता है वो गलत काम करता है, उसमें नहीं है। ये हमारी जनरेशन जो थी, जो कि मैं तो 2 बरस का था जब मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन बहरहाल 7-8 साल 10 साल तब ये सब बड़ा हवा में था और देखते थे, हम सुनते थे। थैंकफुली आई वाज ऑन एन आइलैंड ऑफ सैनिटी। लेकिन ये कि ये चीज़ें थी चारों तरफ। अब जो है, अगर आज के किसी एवरेज मुसलमान लड़के को 22 साल का 23 साल का या लड़की को आप एक्सप्लेनेशन मांगे उससे, तो दैट विल बी वेरी अनफेयर, बिकॉज उसे कुछ पता ही नहीं है, वो उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो उसके कोई खाना है ही नहीं है। उसके लिए अफ़गानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं। देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, दैट्स ऑल। उसका उससे कोई एसोसिएशन नहीं है। वी आर टॉकिंग ऑफ द टाइम व्हेन द फैमिलीज, आधी फैमिली उधर चली गई, आधी इधर चली गई। अब वो फैमिली जो चली गई थी उसमें सेकंड कज़न और थर्ड कज़न तो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। अब वो रिश्ते ही नहीं बचे, किस्सा ख़त्म हो गया, अब कहानी कुछ और है। अब ये बूढ़े लीडर्स जो भरे हुए हैं तेज़ाब से और जहर से, वो उसे इंजेक्ट करते हैं। सोसाइटी में आज ये हो रहा है उनको कि ये कोई भी पकड़ लेते हैं, ISI का है, और उसकी सूरत से लगता है ये बेचारा क्या है, इसकी औकात क्या है। तो ये बकवास है। ये तो पोलराइजेशन बहुत इंटेंशनली किया जा रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, विच इज़ नॉट ट्रू। नहीं, मगर वो किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है मगर कि इस मुल्क में आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी, और रिलीजियस आइडेंटिटी इज नॉट समथिंग दैट यू चोज, यू वर बोर्न। No, all right, all Okay, right. one second. So in that, what you are saying, if you were to ask me who I am, I'd say that I'm a woman. My first identity is of a woman. Second is of Indian. Then I would say mother, daughter, wife, activist, actress, Muslim. Being Muslim is only one part of my identity. But in India, a concerted effort is being made so that all other identities are wiped out, and you are Muslim, he is Hindu, she is Sikh, I am Isai. ये जो कर रहा है, this is not what India is about. What India's the biggest strength of India is her composite culture. So a Muslim Kashmiri and a Muslim from Tamil Nadu have nothing in common with each other, neither the language or the food or anything. But the Kashmiri Muslim and the Kashmiri Hindu have much more in common with each other because of the factor of Kashmirians. So it's the cultural identity which is important, and in our but country only a religious it's also a identity. fact that there is a वो सब concerted सही है। attempt to There is polarize. a Concerted effort. अरे भाई सही है, concerted effort for polarization। तो concerted effort उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए और नहीं, हो वो भी तो है। स्पॉन्टेनियसली होगा, वरना हम नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? आपको प्रूव करना होगा, आपको लड़ना होगा उससे। आज बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के काम करेंगे कि जिससे ये पोलराइजेशन गलत प्रूव हो। तो इंटेंशनली इस पोलराइजेशन को गलत प्रूव करने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो इज इट बिलो योर डिग्निटी और इज इट नॉट राइट? इज नॉट, इट्स ट्रैजिक बट इट इज ट्रू, इट इज रिक्वायर्ड।
No, anyway, if you don't mind, I think we I have may, slightly not moved too away sure from till the I film, don't- but I just slightly. but पहले I मालूम just तो हो want गया। to, I just want to, before I throw it जी। to the audience, Javed Saab, I'd like you to tell us, and Shamaji, if you can also give the background of it. The Qawwali is simply just too mind-blowing. So please tell us a bit about that Qawwali. It's just fantastic. In Fatehpur Sikri, they have decided that this is a very old Qawwali which was written about 200 years ago, you know. And they sing it like that. They don't know that it was written by Kaifi Saab for the film, you know. देखिए कैफी साहब ने तो जो भी लिखा है फिल्म के लिए अच्छा ही लिखा है, तो वो तो कोई हैरत की बात नहीं है कि कव्वाली इज़ अ वेल रिटन कव्वाली, तो होनी थी, देयर वाज नो चॉइस। But what a moment it comes. वो मुझे नहीं लगता है, मैं तो देखिए रैशनलिस्ट हूँ और मुझे ये सब ये कब्रों के ऊपर कव्वालियाँ गाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे इट्स आउट ऑफ माय No, I'm asking you as a lyricist. लिरिक्स वेल रिटन। And as a film person, as a script writer, what do you think the moment that it comes? नहीं वो मोमेंट मुझे इसलिए नहीं टच करता है कि मेरे अंदर मैं स्पिरिचुअलिटी को डेब्री ऑफ रिलीजन समझता हूँ, कि जब आप ट्रेडिशनल रिलीजन से एम्बेरस हो जाते हैं तो आप ये स्पिरिचुअलिज्म के फॉक के पीछे छुपते हैं। ये सब जो आजकल ये I स्पिरिचुअल think it's a brilliant qawwali and अरे वो it's तो कह used दिया ना। brilliantly in the movie. Brilliantly नहीं, used. नहीं, The मगर moment It it goes comes. straight अरे to the heart. वो सब Kills कह लो, you. मगर सिंस आई एम रैशनलिस्ट मुझे वो मूव नहीं ये करेगी। ये You're ये limited. ये Javed आई एम Saab, लिमिटेड टू विजडम, सॉरी। Javed Saab, there are hardcore communal people, but there are hardcore rationalists also sometimes. Equally hardcore. So what is the wrong? What's Nothing wrong with it. I just thought I'll point. और आप कह रहे हैं जो कि हार्डकोर ऑनेस्ट हैं। पता नहीं honest की बात नहीं है. Honesty is no currency. But I'd like to throw it to the audience because this has been a fantastic audience which has stayed for since the movie began, which was 7:30 and before that when they came, and it's still here. So please ask your questions. Obviously you like to ask all three of them. Javed Saab, I think, has exceeded his quota for the moment. Maybe they like to talk to her. This is just a small friendly remark. Anyone? Yeah, Mahesh. No, but Shamaji is here. I think we should not lose that opportunity. I think. So well shot. The way the scenes are done, the way the edit is done. The edit is It's a also bit- I very mean, leave good. alone anything else. I mean, like Javed Saab says, it could have been shot. No, I mean, it's so well. I mean, you can't find a flaw. Yes. And with that equipment. I mean, when you do that scene between Jalal Aga and Geeta, and it's done in that almost a single shot, Yeah. where he appears and the way the cameraman pulls the focus, right, and everything, it's so fabulous. Even the riot is done so well. And then when you cut exactly at that same moment, where it should, and never is the performance modeling. You look at Balasani's performance. Oh God, As the it's wife, brilliant. whether the mother, whether the daughter dies, I mean, he's just a stubborn man. So he's not playing to the gallery. He's not saying, I'm such a good man. He was ziddi. Sometimes you feel exasperated by his stubbornness. But that's the way he is. His daughter's dead, his brother's gone, he's just stubborn and sticking to something. It's a belief, maybe an irrational belief. What can you question about the film is, what was Mirza's decision right to stay back? In the end, when you see the film today, that's the only irony. I mean, But- it was right. I mean, It was I'm right. the- I was No, of right. course right? it was, It but was Sudhir- right. But I mean, some people. But if somebody Sudhir- would say it's not, I Sudhir- wouldn't disagree. Sudhir, you did notice that there are red flags all over the place. So I Yeah, I think mean that- that's those are I mean the IPTA is producing the film. So I that mean, there is a propaganda. notion. Well- I'm saying any film is open to. I mean, the content is in the head of an audience. No, so I mean it's the Mirza decided to stay. You can decide whether it's right or wrong.
the film obviously is on the side of him staying in, you know. I mean, and it was right. And for us who come from from Lucknow or something, I mean, it was, and so many people stayed. And but you know, if somebody, you know, today, I've just done a film, something which is kind of a reaction to this film. Oh, what is it called? It's called Afwa, Afwa. rumors. So it's a kind of reaction to this time, you know. I'd like to see it. So Yeah, you know. it won't be released according to Javed Saab. You know, T Series has produced the film. Oh, wow. Oh, wow. Funded the film. So, I Shamaji, mean, would I you don't like know, to but I mean, clarify anything? there is no, and I've not made the film with any. Compromises. Yeah, I'm not necessarily a sensationalist anyway, but you know, I've just made the film that I would have if whichever government was in power. I'm just saying these are the films that inspire you. You know, I mean, Yeah. this is the film and the dialogue. You know, I mean, it's. I'm from Awadh, so I mean, this is how. I mean, even my grandmother spoke like this. Yeah. So the idea of Urdu is different in every place. No, there is no such thing as Urdu. In Hyderabad, they speak it differently. Shaukat Appa spoke it differently when she spoke. You know, Kafi Saab spoke it differently. I mean, there is a flavor of the local. Yeah. There's the flavor of Awadh, of a place. When the grandmother speaks, especially, there is such a flavor. It's the same thing as my grandmother would speak almost. I mean, it's beautiful. The way the whole film is constructed. It's amazing. Anyone? No, Mahesh. Mahesh is- Yeah, Mahesh. just a quick one. I was going to praise the film, but there's no more praise I think I can give the film. But day before yesterday, when this festival opened, it's called Should Art, by the way, and Pratap Bhanu Mehta, talked with all of us, and there was something very interesting that some of us took at the end of it. It's not about, if you're in the creative community and if you're in the arts broadly, it's not about taking a position. What are you doing with your art? Okay, that was the question. It's not where do you stand? Is this your political position? That's a very easy thing to do. What are you doing artistically with to express yourself? And to think that in 1970, 71, whenever the film was being made, it is stunning. And I think that is the call upon a lot of us, or whoever wants to, work in the realm of, artistic expression. It is not about taking a position politically. It is about how are you going to express yourself. And that's most beautifully done in this. Yeah, please. Pavitra. Somebody give her a One second, mic. take the mic. I mean, as an aside, how much like Shaukat Appa you look now, Shabana. It's crazy. But I have a different question, which is that Satyu Saab said at the beginning, in the little clip that we watched, he said that Kaifi Saab made a few changes to the story and to the script. And I was wondering whether you could shed some light on what was in the original story that he changed or took out. Shamaji. Shamaji. See, the original story follows similar line, except the characterization was not so detailed as Kaifi Saab is gone. But he decides to go to Pakistan. And there he finds that when he wants to pray, there's no praying mat for him to pray. So this is how it ended like that. So my father was very upset with that, and so then I took it to Kaifi Saab, and Kaifi Saab changed the end. वो उसमें लाल झंडे डाल दिए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये लाल झंडे निकाल के आप कांग्रेस के झंडे डाल दीजिएगा, तब हम इसको सेंसर में से निकलवा देंगे. मगर वो नहीं, हमने जिद की कि नहीं, लाल ही झंडे. नहीं, मगर जूतों, he was also not a shoe. It wasn't a shoe factory. No, it wasn't a shoe factory, and it was set in Awadh. He said that these women that Ismat Appa has shown is actually her own family, and these are people from Western UP. Eastern UP की औरतें इतनी दबंग नहीं होती हैं, according to Kaifi Saab.
और शू इसलिए किया कि वो खुद he said let's set it in western UP. Then we decided on Agra. He said if you're doing it in Agra, then we'll have the leather thing, because I have worked in Kanpur as a union leader in the leather industry, so I know how that industry is organized. So that's why he May I selected. say something? इसी तेरा नहीं ना आपसे परमिशन जरूरी जड़ें, as I mentioned earlier, and चौथी का जोड़ा. जड़ें is about an old lady who, because of the custodian That's law, her own mother. she leaves. Shaukat Appa's own, and Ismat then- Appa's own mother. And yes, ये इसमत आपा की कहानी जड़ें. दूसरे चौथी का जोड़ा वो लड़की जिसकी शादी इसलिए नहीं हो पाती कि उसके मंगेतर पाकिस्तान चले जाते हैं, and then they ditch her. ये दो कहानियाँ जो बेसिक्स हैं ये इसमत आपा की. उसके अलावा जो पूरा सोशल कॉन्शियसनेस है बाकी और जो सारी पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी लाई हुई है कैफी साहब की. Yes, that's what. मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैंने वो दो कहानियाँ पढ़ी हुई हैं जिनसे लिया गया, तो जो कुछ उसके अलावा है वो किसी और का है. ऐसा नहीं था ना. उन दो कहानियों के बाद एक और स्क्रीन प्ले थी जिसपे मेरे अब्बा ने एतराज किया, फिर कैफी साहब से कहा गया. तो चलिए, अम्मा एतराज़ तो रिलीज नहीं हुआ ना. नहीं तो उसमें और पॉलिटिक्स थी, मगर उसके एंड ठीक नहीं था, इसलिए कैफ साहब ने उसको रिवर्क किया है. ये इसका सिर्फ end नहीं क्या है कि- था ये original? सिर्फ ये नहीं है कि कि दो he कहानियां उस इस्मत आबा की कहानियां ली, उन कहानियों को जोड़ा गया था एक स्क्रिप्ट में, नहीं, और इसमें और चीजें भी डाली गई थी. And it got how many national awards, Garmava? None. None. Just one for. One for नहीं, national अब्बा को तो मिला integration. था. आपको और अब्बा को मिला था? सिर्फ स्क्रिप्ट पे मिला था और एक बस एंड हिंदी फिल्म और उर्दू फिल्म जो होती है. National integration, I think. हाँ, और national integration. नेशनल इंटीग्रेशन. वाओ. हाँ. और ईशान को नहीं मिला था? नहीं. So he got for Mutyala Muggu or something. And what about Filmfare Awards? None. नहीं. तीनों अवार्ड मिले थे. तीनों अवार्ड मिले थे कैफी साहब को. स्टोरी, फिल्म करके. स्क्रीन प्ले, डायलॉग इसमत आपा और को दो मिले. शी शेयर्ड विद कैफी साहब स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले अवार्ड, एंड डायलॉग का अवार्ड अकेले कैफी साहब को मिला, और तीनों अवार्ड उन लोग को मिले. शमा को भी मिला था. शमा doesn't remember. अरे सबका. Anyone? No? No. I just want to check if there is anyone else. If not, then you get it. Please. No, I just wanted to go back to that point that you made about, how do you mainstream characters by not typecasting them or by not sort of caricaturing them. And I don't think that's restricted to Muslims in film, and I don't think it's restricted to Indian films. Because I think that, if you look at, for example, sitcoms in the West, you'll have the South Indian or whatever, the Indian nerd playing the scientist. Very often in Indian films, you'll see all the time the drunk Christian, Christian log. You'll find the South Indians who are always, caricatured in a particular way. So I think isn't that part of the narrative of film, that if you don't give it that, I think the magic lies in how much do you flesh that character out. Because if you just leave it as a name, my children, for example, have no clue by a person's name, and I think that's to Javed Saab's point when he was talking about Uzbekistan, Pakistan is the same. I think at a sort of a basic level they may know, but a more nuanced name, Amar versus say Amar, my children may not know which is Hindu and which is Muslim. So I think that when you're creating these characters, perhaps it's part of the medium that you have to give it some amount of hooks, some hooks that people understand. I'm sorry, but Hindi film is not Indian film. Absolutely, I agree with you. You I'm a should have South said Indian. Hindi film. And let me also say that I didn't No, but understand don't the say entire Indian movie films. because for me, Urdu, Hindi, both I struggle. So let me preface it. And Javed Saab is the one who's taught me whatever little Hindi and Urdu I know. So I must give him credit
for that. But you're right, it's not Indian film. But I'm saying across India, in films, you do struggle with, how do you characterize people in a syncretic culture? How do you just by referencing a name, how do you then also create a context? Well, at one time, everybody in Hindi films was a Punjabi. And so everybody in weddings would do balle balle and wear pink turbans and so on. So we have named those films as Khatriyat films. Katriyat. Yes. See, I, for example, don't know what Katriyat means. Yes. Well, But Amar Akbar Anthony, na? Huh. though I must say, Manmohan Desai's secularism was a far more intelligently put across this than many other films because he let it be. It was fun. And what I took away from it was a sense of, the girls don't change their religion at the end of the film. That was a very important point, I felt. Then this was emphasized beyond a point except to create some sense of joy. My name is Anthony Gonzalez. There was a sense of joy and all that. So cliches were there plenty, but it got the message across. That's what I feel. Including that blood donation scene. अभी देखिए वो तो कोई मैसेज वगैरह दे नहीं रहे थे, आपको मिल गई वो अलग बात है. हमको ही लोग बोलते रहते हैं आपकी वो पिक्चर का वो जो सोशियो पॉलिटिकल रेलेवेंस था, हमको तो कुछ पता नहीं था कि ऐसा कोई सोशियो रेलेवेंस है, पॉलिटिकल कुछ हमको नहीं मालूम था. वी वर मेकिंग फिल्म जो कि चले और वो लोगों को अच्छी लगे. मनमोहन देसाई को आप बताएंगे कि अल्टीमेटली यू आर वर्किंग ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ही वुड हैव डाइड शॉक. उसे कुछ नहीं मालूम था, पर हमें मालूम था कि ये जो है अच्छा है, ये मरेगा, लोगों को पसंद आएगा. और यार अर्बन ऑडियंस में बहुत सारे मुसलमान होते हैं, जरा सा उनको भी अच्छा दिखाओ, खत्म बात. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसमें ये तो बाद में पढ़े लिखे लोग उसे एनालाइज करते हैं. भाई हमको हमारा काम नहीं था. भाई हमें भी तो दुकान खोलनी है ना. तो और आपको बताऊं, थिंग्स आर इम्प्रूविंग बाय एंड लार्ज सिनेमा में. ऐसा नहीं है अभी जो सिनेमा बन रहा है, बुरा सिनेमा तो हमेशा बना है, उसे तो जाने दीजिए, मगर जो अच्छा सिनेमा आज बन रहा है इज मच मोर मैच्योर्ड. और उसमें जो आप शेड्स की बात कर रहे हैं और ग्रे शेड्स की बात कर रहे हैं, वो आज जितनी है पहले नहीं थी. ये अब हो रहा है. तो लेट्स नॉट बी पेसिमिस्टिक. अभी 4, 6, 8 फिल्में ऐसी बन गई मगर वो क्या हुआ, बॉक्स ऑफिस पे भी नहीं एक्सेप्ट होती हैं. कमाल की बात तो ये. जावेद साहब, ये सही बात नहीं है. कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस में हुई थी और उसने जो जहर फैलाया है, तो इसको मानना पड़ेगा कि आज एक ऑडियंस है, एक एक्सेप्टेंस है उस बकवास. नहीं वो सही है, मगर आप हिंदुस्तान में एक साल में कितनी फिल्में बनती हैं? मोर देन 900. एंड यू आर टॉकिंग ऑफ वन फिल्म. उसी तरह की और भी कई बनी हैं और वो फेल हो गई. तो हर तरह की फिल्में बनती हैं, उनमें से ज़्यादातर आप देखिए ऑडियंस जो है वो वहाँ जाती है एनग्रॉस होने के लिए. और वो ये जो अभी पॉलिटिकल एजेंडा आया है, इस पे कई फिल्में बनी हैं, एक नहीं, वो नहीं चली हैं. अल्टीमेटली आर्ट कैन नॉट बी फैशिस्टिक. दुनिया ने बड़े बड़े फैशिस्ट पैदा किए हैं. यू नेम वन फैशिस्ट पोएट जो कि बड़ा पोएट हो, वन फैशिस्ट नॉवलिस्ट और अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. नहीं हो सकता. आर्ट हैज़ टू बी सेकुलर. आप कोशिश करेंगे फेल हो जाएंगे. कभी गड़बड़ में कोई चीज़ निकल भी जाए, ये भी पॉसिबल है. लेकिन अल्टीमेटली पोइट्री जो है, फैशिस्ट पोइट्री नहीं चल सकती, पॉसिबल ही नहीं. उसी तरह फैशिस्ट सिनेमा नहीं चल सकता. एक कोई होगा, कोई रॉ नफ थी. जो कश्मीर का मामला है वहाँ उसमें बहुत से लोगों की एक रॉ नर्व है और वो हो गया. लेकिन आप ऐसा कीजिए कि बॉम्बे राइट पे भी बना दीजिए. इस तरह की नहीं. जब बनाएंगे तो बॉम्बे जैसी फिल्म बनानी पड़ेगी आपको, जहाँ बैलेंस करेंगे, जहाँ आप दोनों को दिखाएंगे, दोनों की मुश्किल भी दिखाएंगे, दोनों की तकलीफ भी दिखाएंगे, दोनों का पॉजिटिव साइड भी दिखाएंगे, वरना नहीं चलेगी. Chalo, on that note of optimism about Indian cinema at the moment and generally cinema, we bring this evening to a close.
Thank you very much. Our panelists, Shama ji, Javed Saab, Shabana, and thank you for a wonderful audience which stayed the course. And with us. thank you, Anuradha Parikh and Thank you, G5A. Anuradha This Parikh. is such a And Nikhil wonderful Advani. Where is thing. Nikhil Advani? And Nikhil Advani, because this is so precious what you're doing. It's so precious. We really need spaces where we can watch these kind of films. So really, thank you very much.